Assalamu alaikum and hello. This is Agha Waisf. Today we are going to study nomenclature. This article has been taken from first year biology book of Punjab textbook board. So let's just begin. So very first thing is, what is nomenclature? Nomenclature क्या है? Very simple. It is a system or method of giving scientific name to something. It is when we are talking about science, then it is a scientific method of giving names to things. So you will also find this terminology in chemistry. There is also a term used, nomenclature. So nomenclature simply means giving names, a method to give name. Okay. So what is nomenclature? We know that it is a method to give names. कि हमें नाम देना है किसी चीज़ को, but we need to use a method. We cannot just deviate from that method. So the name given should always be perfect. So why do we need? What is the importance of nomenclature? Why it is so necessary? There are certain reasons. The very first thing, the name we usually use, जो आमतौर पर हम नाम यूज़ करते हैं जब, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर के इस टॉपिक को बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हम क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं, तो हम नाम भी ऑर्गेनिज्म्स के नाम की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो नाम हम जो आम कॉमन नेम हम अपनी लाइफ में किसी जानदार को, किसी ऑर्गेनिज्म को के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं या उसको देते हैं, वो नाम जो है वो कॉमन हम जैसे आम लोगों ने दिए हुए हैं. उनके लिए कोई बुनियाद नहीं है, किसी सिस्टम के थ्रू हम उन नेम्स को नहीं दिया गया. तो इस वजह से ये नेम्स जो हैं ये साइंटिफिक स्टडी के दौरान प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो प्रॉब्लम यहाँ पर मेंशन है. वो प्रॉब्लम है ये 3 किस्म की. नंबर 1, दिस वन, डिफरेंट नेम द वन सेम ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको बहुत सारे मुख्तलिफ नाम दिए गए हुए हैं. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ वन सिंगल नेम इज़ गिवन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम कि एक ही नाम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म्स को दिया गया हुआ है. एंड थर्ड इज़ जो कॉमन नेम हम आमतौर पर यूज़ करते हैं उनके लिए कोई साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक बेसिस नहीं है. ओके, उनके लिए कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. For example, in Pakistan, when we talk about different names of one single organism, पाकिस्तान के अंदर ही हमारे अनियन जो प्याज है, इसको गंडा, बेसल एंड वेसल के नाम से पुकारा जाता है. सो इट इज़ इन साइंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, तो साइंस के अंदर इस तरह हम ये नेम नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज डिफरेंट साइंटिस्ट कैन नॉट यूज़ डिफरेंट नेम्स. दे ऑलवेज हैव टू यूज़ वन सिंगल नेम. सिमिलरली देयर इज़ ए प्लांट, ए मोल्टास, अर्गवाद, इसके जो मुख्तलिफ नाम हैं, अर्गवाद, गुरमाला, गोल्डन शावर एंड पर्जिंग कासिया, जिसके नेम यूज़ होते हैं. सो these names will cause problems. The second thing is the single name for different organism. मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दे देना, ये भी साइंस के अंदर इंतहाई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेकर आता है. फॉर एग्जांपल ब्लू बेल, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स को नाम दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स के पौधों को नाम दिया जाता है जिनके फ्लावर की शेप क्या है? बेल नुमा है. फ्लावर की शेप उनके बेल नुमा है. सो अगेन वी कैन नॉट से दिस इज ब्लू बेल 1, दिस इज ब्लू बेल 2, दिस इज ब्लू बेल 3. So we just have to name, give one single name to one single organism. Another example from this problem is blackbird can be, you can call blackbird to crow, you can also call blackbird to raven, or there can be another organism with a color, black color, so you can also call it blackbird. So calling blackbird to a bird, so it will be problematic. So we cannot use such names like blackbird or bluebells. The third problem is there are no scientific basis of the common name. जो common name हम यूज़ कर रहे हैं उनकी कोई किसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू नहीं दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल सी सिल्वर फिश, यू मस्ट हैव नो, आपने ये नाम सुना होगा, और दिस नेम, तो यू कैन सी इट्स नेम इज़ फिश, बट एक्चुअली it is an insect. So what is this? An insect is named as a silverfish. So it is problem. Let me show you its picture.
Okay, there is a picture of silverfish. So this is silverfish. So how confusing, इसके नाम के साथ fish है but it is an insect. So just I said कि जो scientific names हैं they all जो common names हैं इनकी कोई scientific base नहीं होती, but we just name them. This silverfish को silverfish इसलिए कहते हैं because it usually has a silvery appearance and a shape like a fish. So just due to these similarities इसको silverfish कह दिया जाता है. So it is not a fish. Just like that crayfish, jellyfish और starfish को भी fish कहा जाता है, but they are not fishes. Fishes are something else. Fishes are animals which are vertebrate, that is they have vertebral column. So let's move ahead and let's see some examples. So the problem one was one plant with different names, एक organism के मुख्तलिफ नाम. So here we have the plant we named earlier, the multus. It is also called as golden shower, argwad and gurmala. So one name for a different name for one single plant. So again it is problematic. Many organisms with one name, like you see three different flowers here, three kind of flowers there. They look like same. They do look like same. So this is the problem, because they look same. They all have bell shape, so they are called bluebells. Although they are different flowers. Okay, and thirdly, non-scientific basis. So here are three organisms: the jellyfish, starfish, and the crayfish. They are called fishes, but actually they are not fishes. Fishes, I just told you that fish is an organism which has a vertebral column. So here is a fish. This is a big fish. Okay, so it is shown as a fish. So it has a vertebral column. तो फिशेज में वर्टिबल कॉलम मौजूद होगा, जिसको हम उर्दू में रीढ़ की हड्डी कहते हैं. लेकिन ये जो तमाम ऑर्गेनिज्म आपके पास राइट साइड में पिक्चर में मौजूद हैं, जेली फिश, स्टार फिश वगैरह, इनमें ये वर्टिबल कॉलम मौजूद नहीं होता. ऑल्दो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर, बट दे आर नॉट फिशेज. So these are the problems which cause what? They cause confusions. So we cannot use these common names in science, because scientists always use one name for one organism. So we need a system. We need a system to describe these animals, to name these animals. So okay. So here is a person who firstly gave the system. Carolus Linnaeus, he is also called as the father of taxonomy. He gave a system of giving scientific names to the organism. Actually, he was a Swedish botanist and belonged to Sweden. And he gave a system. And what was that system? He devised a system for naming and classifying organisms known to him. At that time, उस वक्त अपने वक्त में जब इनको कार्लस लीनियस को जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, उस वक्त जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में इनको मालूम था, जिन स्पीशीज़ के बारे में ये जानते थे, उस वक्त इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए एक सिस्टम डिस्क्राइब किया. और ही सिस्टम बिकेम वेरी पॉपुलर एंड so popular that it became international. He discarded all common names of plants because he was a botanist. So he firstly named plants by his system, using his system. Okay, what was that system? He gave the plants scientific names. Okay, and all those names he took from Latin. Actually, he wrote the book. I will let you know what that book was. He gave names to those plants. He took all those names from Latin, and every scientific name he gave, it had two parts. हर scientific name जो उन्होंने किसी भी organism को दिया, उसके दो parts थे. I will let you know. I will describe all those two parts. Two parts of scientific name. So a scientific name has two parts. A scientific name has two parts. For example, A and B. And what are those A and B? The name either refer to, okay, and whether A or the part B. Remember that this is one name. This is one name. ये दोनों के दोनों parts जो हैं, they either refer to the characteristic of organism. या तो ये जो दो नाम एक scientific एक ऑर्गेनिज्म को ये जो नाम दिया जा रहा है, इसके दोनों पार्ट या तो उस ऑर्गेनिज्म के किसी करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, या उसके किसी करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेंगे, शेप को, फॉर एग्जांपल कलर को, व्हाटएवर. या मे बी वो फर्स्ट पर्सन, वो साइंटिस्ट जिसने फर्स्टली उस
ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया होगा या कलेक्ट किया होगा, फर्स्टली, या डिस्कवर किया होगा। ये दोनों में से कोई एक नाम उस पर्सन के नाम पर भी हो सकता है। सो इट इज़ अप टू यू इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, you can even give your you can even if the scientific name can be given in your name as well. Okay, all those names he gave at his अपने वक्त में इन्होंने जितने भी वो साइंटिफिक नाम दिए, he published those names in 1753 in his book, and that book became very popular. It became worldwide, international, and it became so popular that he gave a name to the animals as well. Later on he published those names as well in 1758. So there are two publications in 1753, very important publications belonging to Carolus Linnaeus, and remember that कि ये publication किस मकसद के लिए हैं, साइंटिफिक नेम देने के लिए हैं, कार्लोस लिनियस के टेक्सोनोमिक मेथड के लिए हैं। ओके, 1753 एंड 1758 मैनी नेम्स, और जो उस वक्त इन्होंने बहुत सारे नाम्स प्लांट्स को या एनिमल्स को दिए, दे आर स्टिल यूज्ड टुडे। ओके, दोज आर द टू बुक्स, स्पीशीज Plantarum and Systema Naturae. I have written the English version of those books, the Species of Plants and System of Nature. Remember the date of these books, 1753, जो plants की book है, और जो animals की belong करने वाली book है, it was published in 1758. One more thing you should know, I'm just telling this thing, कि जो प्लांट्स की जो स्पीशीज़ को नेम दिए थे एट हिज टाइम, कार्लोस लिनियस उस वक्त तकरीबन 5900 के लगभग बुक्स हैं। रिमेंबर दिस फिगर, 5900 के लगभग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी प्लांट स्पीशीज़ प्लांटेरम में नेम दिए थे। और जो सिस्टमा नेचुरी है, इसके अंदर उन्होंने जो एनिमल्स को नेम दिए, दैट ऑलमोस्ट दैट वाज अप टू 4326 एनिमल्स, 4326. Remember this figure. I'm not going to write it. You just need to remember this one. And those books were in Latin. Okay, so this is about his books. So that is why he's named as the father of taxonomy, because we are using his method of naming. And what was his method of naming? Let's see that. Let's describe that method. So his name, because we just said that कि जो कार्लोस लिनियस ने जो मेथड डिवाइस किया था साइंटिफिक नेम देने का, नाम देने का, दैट मेथड, इसके जो दो अहम पॉइंट्स, इसका जो अहम जो पॉइंट है वो क्या है, एवरी साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. सो वी वुड से बाइनोमियल, सो देयरफॉर द टर्म हियर इज बाइनोमियल. बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, a name that is consisting on two parts, and nomenclature means method of naming. Okay, so this is a method of naming in which a name consists of two names. A name consists of two names. It is a system of giving each species a scientific name. All right, it was proposed by Linnaeus. All right, and we know that the scientific name consists of two parts. The first part I just told you, it has two parts, A and B. The first part is actually the genus name. The first part is genus name. Okay, the second part is, it is species name. It is species name. Species name. So, and the generic name is the first part, that is called a generic name. It is also called a generic name. It always starts with a capital letter. It always starts with a capital letter. The second part always starts with a small letter. Okay, let's describe it. इसको जरा बयान करके देखते हैं, explain करके देखते हैं. So here is another form. So we can say the first part is genus, the second part is species name. Okay, अच्छा, अब ज़रा एक और बात, बहुत इंतहाई अहम बात, कि जब भी हम साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम लिखता हूँ गुलाब का, रोज़ का, रोज़, यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ रोज़. रोज़ मीन गुलाब का फूल, जिसको हम कहते हैं गुलाब. साइंस में इसको हम कहते हैं, बायोलॉजी में हम इसको कहते हैं, बॉटनी में
Rosa indica. Rosa indica. Now what is this? This is genus and this is species name of rose. Now when I am writing with this name with my hand, what I have to do? I have to underline this name. I have to underline this name. If you don't underline it, it will be considered as wrong. You have to underline it. When you are typing this name, you don't have to underline. You just have to bold. You just have to italicize it. Okay. So this is very important. You have to underline it. And remember that one species in science, one organism always has a one scientific name. One organism will always has one scientific name. That is कि आप जो लाइन है, लाइन की मुख्तलिफ वराइटीज़ भी हों, उनको भी एक ही साइंटिफिक नेम दिया जाएगा. ओके. कैट के लिए एक साइंटिफिक नेम, डॉग के लिए एक साइंटिफिक नेम. यू कैन नॉट कॉल आप कैट को कैट कहें और साथ बिल्ली भी कहें. साइंस के अंदर ऐसा नहीं होगा. साइंस के अंदर कैट को एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा. ओके. वन मोर थिंग, डू वी ऑलवेज हैव टू राइट द फुल साइंटिफिक नेम? क्या हमें हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म के मुकम्मल साइंटिफिक नेम को लिखना पड़ेगा? लाइक दिस, आई जस्ट टोल्ड यू के द साइंटिफिक नेम ऑफ rose is Rosa indica. So do I always have to write down Rosa indica? So this is a question. This is an assignment. You have to tell me that. You can even answer it in the comment section after the video. Okay. Okay. Here are some examples of scientific names. So this is onion, you know that, and it is called Alimum cepa or Alimum cepa. This is Amalthus and it is called as Cassia fistula. These are scientific names. You need to memorize his name. And here are we, humans. So humans are called as Homo sapiens. Genus name and species name. Homo sapiens. So our scientific name is Homo sapiens. Thirdly, here is potato. You all eat potatoes, so many potatoes. You keep on eating fries. Whenever you have burger, you always have fries with them. So potato is called as Solanum tuberosum. Genus name and it is its species name. Okay. So here is brinjal, the eggplant, also called as eggplant. इसको eggplant भी कहते हैं. It is called as Solanum melangina. So here is one thing. Can you see that? What is this? This is a question mark belongs to, it is Solanum and it is also Solanum. They both have same generic name. That means they both belong to same genus. Okay. So initially the basis of classification were morphology. Simply morphology. We will talk about these bases of classification in the next lecture. But when we advanced in biology and when we advanced in science, we came up to some more scientific names. So with some more scientific bases like cytology, physiology, genetics, molecular biology, biochemistry and so and so. So जैसे जैसे हम साइंस में एडवांस करते गए, हमने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए साइटोलॉजी को भी यूज़ किया, फिजियोलॉजी को भी. दैट मीन इसका मतलब ये है कि जब हमने ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो हमने ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स को कंपेयर किया, हमने उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दरमियान कंपैरिजन किया, फिजियोलॉजी में कंपैरिजन किया एंड साइटोलॉजी में. दैट मीन्स कि हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि हम साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स जैसी फील्ड्स को भी यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ दैट्स ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर. आई होप कि आप लोगों को समझ आई चुकी होगी. अगर कुछ क्वेश्चन आपके हैं, यू कैन इवन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन इन योर असाइनमेंट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.